Hello students, this video is for grade LKG. Let's start. We have three different sections in this sheet: English, Maths and EVS. We will learn about three different subjects: English, Maths and EVS. Let's start with English. First question is take the correct answer. What we have to do is we have to tick on the correct answer. जो correct answer है उस पर tick करेंगे. Okay. The rat is dash the mat. Rat mat के ऊपर है या फिर rat के मतलब rat से ऊपर है मतलब हवा में. above मतलब यहाँ हो जाएगा हवा में हो जाएगा. और on का मतलब ऊपर है. rat mat के exactly ऊपर. तो rat कहाँ पे है? On the mat. Yes, the rat is on the mat. So we will tick on mat. On the mat. On on. The dolphin is dash the ocean. The dolphin is in the ocean. Dolphin कहाँ है? Ocean में है. Okay. So in this way you have to see the pictures properly and then you have to tell that where is that object. Okay. और आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीपोजिशंस पर टिक करके करेक्ट आंसर पे टिक करना है. ओके. Yeah. Now see the second question. Identify the opposites from the pictures. Okay, what we have to do in this, we have to identify the opposites. इसमें क्या करना है? हमें इनके opposite को एक दूसरे से मैच करना है. Like you can see the first pictures of old lady. एक old lady है और second column में देखिए लास्ट में क्या है? एक young girl है. तो old का क्या होगा? Young. So we will match it with old, young. Hot, you can see hot teapot and cold ice cream. Hot, cold. Okay. In this way, you will match these pictures with their opposites. Opposites means ulta. Means इसका जो भी opposite word है. These are not in words. These are in pictures. Okay. यहाँ पे words में नहीं है, ये pictures में है. You have to match these opposite. ओके. इन ऑपोजिट को एक दूसरे के पिक्चर से मैच करना है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन विच इज ऑफ मैथ्स. सर्कल द बिगेस्ट एनिमल इन ईच रो. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, वी हैव टू सर्कल द बिगेस्ट एनिमल. 4 rows given है. in this what we have to do is we have to सर्कल द बिगेस्ट एनिमल. जो सबसे बड़ा एनिमल होगा उस पर हम सर्कल करेंगे. इन द फर्स्ट यू कैन सी 3 डायनासोर्स आर देयर इन विच द मिडिल वन इज द बिगेस्ट. जो बीच वाला डायनासोर है वो सबसे बड़ा है. सो वी विल सर्कल इन ऑन द बिगेस्ट मीन्स मिडिल डायनासोर. इन सेकेंड यू कैन सी द लास्ट टाइगर इज बिग. ओके. जो सबसे लास्ट वाला है एनिमल है वो बिग है. सो लाइक दिस जो एनिमल आपका बिग है. ओके. हर रो में जो भी एनिमल बिग होगा मतलब बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू द रो के अकॉर्डिंग. ओके. उस पे हम सर्कल करते जाएंगे. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर द पिक्चर्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर. छोटे से बड़े तक में हमको क्या करना है? पिक्चर्स को नंबरिंग करना है. 1 2 3. ओके. सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटे वाले पे 1 लिखेंगे. उससे जो बड़ा होगा उसमें 2 लिखेंगे और जो सबसे बड़ा होगा उसमें हम 3 राइट करेंगे. ओके. जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट उसमें 1 राइट करेंगे. जो सबसे जो छोटे वाले से थोड़ा बड़ा है उसमें हम 2 राइट करेंगे. और जो सबसे बड़ा है मीन सारे ऑब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा है पहले के 2 ऑब्जेक्ट से वो उसमें हम 3 राइट करेंगे. ओके. सो विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, with the help of counting, we will get to know that
we will set these pictures in their smaller to bigger in their ascending form. इनके ascending form में हम इन्हें set करेंगे. Okay, what is ascending? Ascending means smaller to bigger. Okay, ascending means smaller to bigger. Okay, so one time we will revise counting. एक बार हम काउंटिंग रिवाइज करेंगे 1 से लेके 50 तक. ओके, 1 to 50. एवरीवन रिपीट विद मी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Okay, so we have read counting 1 to 50. Now we will read counting 51 to 100. Repeat with me. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100. Very good. Okay, so we have read counting 1 to 100. Now let's see the last section, which is of EVS. Let's name the body parts. In this, what we have to do is we have to name the body parts. You can see a picture, okay, a picture of a boy. यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर बनी हुई है. इसमें हमें क्या करना है, बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको एरो करके दिखाया गया है. हमें उन पार्ट्स के नेम राइट करने हैं. ओके, लाइक हेयर, आईज, रिस्ट, नेक, फिंगर्स, वेस्ट, लेग. ओके, सो जो भी पार्ट्स को एरो करके दिखाया है आपको उसके नेम राइट करना है. ओके, and in the last question what we have to do is cut and paste picture of any 4 body parts. यहाँ पे कोई भी 4 बॉडी पार्ट्स के पिक्चर पेस्ट करने हैं और उनके नेम राइट करने हैं. ओके, कोई भी 4. अगर आपके पास कोई पिक्चर नहीं है तो आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं. आईज, नोज, ईयर, टंग, हैंड, लेग्स. ओके, यू कैन ड्रॉ दीज पिक्चर्स ऑल्सो if you don't have. Okay, so I hope you all have understood this sheet. If you still have any kind of doubt in any topic, any question, any subject, you can ask me.
Thank you.